So today we are going to see next part from your absorption. Last session we have seen this absorption. So movement of drug from the site of administration into the systemic circulation, that is known as absorption. After that, drug will be in a blood either in a free form or in a bound form. Suppose that drug is in a free form, so it may go at the site of action. It will show the action, or it may be distributed in the various tissue or various body fluids. Now after that, metabolism is there, and after that, excretion is there. So these absorption, distribution, metabolism, and elimination, they are known as a kinetics. Oh, okay. So what body does with the drug, that is a kinetics. We have seen this absorption process. What is meant by passive diffusion? What is meant by pore transport? What is meant by facilitated diffusion? What is meant by active transport? What is meant by ion pair transport? We have seen this. Okay. What is carrier mediated transport? We have seen this. Cellular transports. Next part is nothing but the. I will start from this slide. Remember what is the pH of saliva. एक बार क्वेश्चन आ चुका है, what is the pH of saliva. So in the saliva you will have 6 to 8 pH. We already covered the various body fluids and their pH in the when we were discussing about the blood. At that at that time only I have shown you all the pH of body and all that. एक आपको आप सबको एक रिक्वेस्ट है, सो प्लीज जो टाइमिंग बोला है मैंने उस टाइम पे ज्वाइन करते जाओ. क्या होता है कि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाता है, तो मुझे सबको एडमिट भी करना है. व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? इट इज अराउंड 6 to 6.8 pH of saliva, and from saliva mostly lipophilic lipophilic drugs they are absorbed. So whatever you are taking in the mouth, so that will be go into the stomach, where it will be distributed, it will disintegrate, tablet will disintegrate, tablet will be broken down into smaller part, it will go into the solution, and the drug will go in the solution. That means there is a dissolution. After the dissolution, drug or drug along with your food, that will be absorbed. So what is the pH of stomach? It is around 1 to 3. Stomach has a acidic pH, okay, and stomach offers limited surface area for the absorption, because stomach का जो एरिया होता है वो कम होता है as compared to small intestine. So most of the drugs, they are not absorbed in a very much amount or very large amount from the stomach. So again that depends on the physical chemical properties of drug, but stomach will offer limited area. Okay, only lipophilic neutral acidic drugs, they are absorbed from the stomach. Acidic drug क्यों absorb होंगे? Because stomach has a acidic pH, and those drugs which are a weak acid, they will remain unionized in the stomach, and they are after the absorption. Okay, and now this will move into the small intestine. With small intestine, so small intestine will offer a largest or huge surface area for drug absorption. So that's why most of the absorption takes place from the small intestine. तो आपको आपको याद रखना है, mostly drugs are absorbed from small intestine. Again that depends on the physical chemical properties of drug. What is the pH in the small intestine? So it is around it is around 7.5. So 5 to 7.5, that is the pH of small intestine, and here very large surface area is available, and that's why absorption takes place. So mostly absorption takes place from small intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपका, वहाँ पे सरफेस एरिया जो होता है, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन विल ऑफर ह्यूज सरफेस एरिया, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एब्सॉर्प्शन. So most of the absorption takes place from small intestine. Okay, it is a major site for absorption. All type of drugs they are absorbed from the small intestine. Most of the drugs, most of the blood from the small intestine and your GIT. Now let's move to the large intestine. So you can see over here, this is a large intestine. Small intestine के बाद में ये यहाँ से it is known as ascending colon. Ascending colon, that is a sigmoid colon, and this part is known as a rectum. So large intestine has a pH 7.9 to 8. So it has a basic pH, and it offers only small surface area. So again, most of the absorption will not occur from large intestine. Most of the drugs absorption takes place through small intestine. Small intestine, because small intestine will give huge surface area for absorption, and that's why जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्सॉर्ब होंगे. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा. और लार्ज इंटेस्टाइन, सो इट हैज अ वेरी लिमिटेड surface area. This one is known as a ascending colon. This one is known as a
transverse column. Is known as a transverse column, and this one is a descending column. Now, what is the pH of small large design? It is a 7.9 to 8. Okay? Small surface area is there, so only limited types of drugs, all type of drugs, they are absorbed. Now, last part is nothing but the rectum. So, in the rectum, what is the pH? Around 7.5 to 8, and it offers very small surface area. So what kind of drugs they used to absorb from this area? All type of drugs they are absorbed. And remember, this rectum is supplemented with the two types of veins. First one is known as first one is known as superior hemorrhoidal vein, and second one is a inferior hemorrhoidal vein. So whatever blood that is absorbed through superior hemorrhoidal vein, that carried to a liver, and whatever blood absorbed from inferior hemorrhoidal vein, that is carried to directly into system. You can bypass the first passing through up to some extent by using whatever drug absorption takes place from this area, stomach, intestine, large intestine, whatever drug absorption takes place through this area. So most of the blood from this area, because ये जो आपका stomach होता है, small intestine होता है आपका large intestine, जो आप खाना खाते हो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, विटामिन है, अमीनो एसिड्स है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट वगैरह. So everything is important. So that's why this GIT is supplied with the one vein known as a portal vein, and whatever absorption of nutrients or food or drugs, along with the drug, whatever blood is whatever absorption takes place. So most of the absorbed content is directly sent to liver. In the liver, some amount of drug may be metabolized, and that is known as a pre-synaptic metabolism or first pass metabolism. We have already seen this. So you can see liver is a major site for drug metabolism, including first pass metabolism. Now, liver also produces bile. Bile is produced by liver, and it is stored in the gallbladder. pH of bile is 7.8 to 8.6. So bile में भी कुछ drugs excrete हो जाते हैं. So bile is a route for active secretion of drug. Only polar drugs and those drugs which are the metabolites of drugs, so they are excreted in the bile. Okay. Now we'll see what do you mean by drug permeation. So drug permeation is nothing but the drug absorption. Okay, so kinetics होता है आपका absorption, ADME. So what do you mean by drug permeation? Drug permeation means which kind of drug is allowed to absorb, which kind of drug is allowed to absorb from which part of your body. So that is a drug permission. So kinetics like ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination, and their bio deposition of drug in the wall in the walls, the permeation across the cellular membrane. That is known as drug permeation or absorption. Now this process depends on which factors. There are certain factors which determines the rate of and the absorption. तो absorption किसका होगा, कौन डिसाइड करेगा, वो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ड्रग के, वो डिसाइड करते हैं. ओके, सो द ड्रग परमिशन डिपेंड्स ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. व्हाट आर दैट प्रॉपर्टीज? फर्स्ट वन इज नथिंग बट द सोलिबिलिटी. ड्रग का सोलिबिलिटी क्या है आपका? So whether your drug is a water soluble, whether your drug is a lipid soluble, and okay, so depends on that, depending on that. Okay, so if your drug is a lipid soluble, so it is going to be absorbed from the site of administration. So lipid soluble drugs, they are mostly absorbed, right? Now water soluble drug is there, and it has a low molecular weight. So again, low molecular weight water soluble drugs, they are also absorbed, but high molecular weight water soluble drugs, they are poorly absorbed. Ability to cross the lipid membrane depends on the solubility of drug. Most of the drugs are lipid soluble. क्या होते हैं? Most of the drug lipid soluble होते हैं, and they are unionized drug. Unionized, उनका ionization नहीं होता है. Unionized lipid soluble drugs, they are mostly absorbed. Okay, low molecular weight water soluble drugs also absorbed through aqueous pores. जो pore transport होता है उससे low molecular weight water soluble drugs भी absorb होते हैं. But lipid soluble drugs जो होते हैं, they are unionized form of lipid soluble drug. They are mostly absorbed, or they can easily cross the biological membrane. So that's why solubility is very. I'm not going to discuss all the factors, but what are the important factors? Solubility is very important. After that, concentration gradient. There should be a concentration gradient. We have seen. अपन ने देखा है कि पैसिव डिफ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए? concentration
ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब ये मेम्ब्रेन है तो इधर अगर कम कॉन्सेंट्रेशन है तो इधर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, so obviously there exists a concentration gradient. That's why there is a movement of drug from higher concentration to lower concentration. That is a fast diffusion. So for the absorption, for the permeation, you need a concentration gradient. So higher will be the concentration gradient, higher will be the drug absorption. More will be the concentration gradient, more will be the drug absorption, right? And absorption of drug only takes place in a free form. अगर ड्रग जो है फ्री है, किसी कोई प्रोटीन को बाउंड नहीं किया है, कोई टिश्यू को बाइंड नहीं किया है, या फिर कोई बॉडी का कोई भी सेल्स टिश्यू है उसको बाइंड नहीं किया है, so only free form of drug is absorbed. You have to remember, okay? So solubility, then concentration gradient. Now third important is nothing but the surface area and vascularity. ठीक है, surface area. So remember, absorption of drug is directly proportional to the surface area. Surface area of the tissue from where absorption takes place is more. So more will be the absorption. So more will be the surface area of absorbing tissue, more will be the absorption. So like small intestine. तो आपका जो स्टमक है वहां से भी ड्रग्स आपका एब्सॉर्प्शन होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वहां से भी ड्रग का एब्सॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वहां से भी होता है, बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, so it has a very huge surface area. That's why most of the absorption that occurs in the small intestine. That's why surface area is directly proportional to absorption. Okay, or you can say absorption is directly proportional to the surface area. Then after that, vascularity. What is meant by vascularity? Vascularity क्या होता है? So it is nothing but the number of blood vessels supplied to a absorbing surface. जो जहाँ से एब्सॉर्प्शन होता है वहाँ पे कितना ब्लड सर्कुलेशन है, वहाँ पे कितना ब्लड वेसल्स है, जितना ज़्यादा ब्लड वेसल्स होगा उतना ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होगा, बिकॉज एब्सॉर्प्शन कहाँ पे होगा, ब्लड में ही होता है, जितना ज़्यादा ब्लड वेसल्स उस एरिया को सप्लाई किया है वहाँ से ज़्यादा एब्सॉर्प्शन. सो वैस्कुलरिटी और number of blood vessels to that particular area of absorption is directly proportional to the absorption. So absorption will be increased if vascularity is there. If there is a less vascularity or less blood vessels nearby area, so less absorption. So absorption directly proportional to surface area and vascularity. Now next factor is nothing but the ionization. Now, this factor is very important. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. So remember ionization. Ionization means what? Compound sodium chloride. This is sodium chloride. So it is made up of sodium plus chloride. So Na plus Cl minus. So that, okay. Now sodium chloride is NaCl. So that is unionized. Sodium chloride क्या है? NaCl unionized. जैसे NaCl है आपका NaCl. So NaCl that is unionized form. Now Na plus and Cl. When you will dissolve that sodium chloride in the water, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, उसको बोलेंगे अनआयनाइज्ड. अगर उसको वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे आयोनाइज्ड. So ionization is very important factor for absorption of drug. And remember, mostly unionized form of drug that is absorbed. Okay? So ionization is again important factor. Most of the drugs are either weak acid or weak bases. जो ड्रग्स होते हैं either weak acid होते हैं नेचर में या फिर weak base होते हैं. So most of the drugs are either weak acid or weak base. Now they exist either in a unionized form. either उनका ionization होगा या फिर unionized form में रहेंगे. So either they exist in a unionized or ionized form. This depends on the pH of surrounding medium and pKa of drug. कि कौन सा ड्रग आयोनाइज फॉर्म में रहेगा, कौन सा ड्रग अनआयोनाइज रहेगा, कौन डिसाइड करेगा. जैसे बोला है मैंने, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे आर आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसिस. ओके, एंड दे एग्जिस्ट इन आइदर आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म. जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl जो नमक है, दैट इज अनआयोनाइज्ड फॉर्म. अगर उसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो सोडियम Na प्लस अलग होगा, क्लोराइड माइनस अलग होगा, दैट इज आयोनाइज्ड फॉर्म. तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होते हैं दे आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस. तो उनका भी अगर वो ड्रग आयोनाइज रहेगा या अनआयोनाइज रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है, वेदर दैट ड्रग विल रिमेन आयोनाइज्ड इन अ आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म, हु विल डिसाइड. सो these two things will decide whether drug will remain ionized or it will remain unionized. What are the two factors? So this pKa and pH of pKa means dissociation constant of drug, right? And pH of gut means pH of your GIT.
Like pH of stomach is the acidic pH, pH of intestine is the basic pH. So depending on that drug, whether drug will ionize or whether drug will remain in an unionized form, so that is decided by these two things, pH and pKa of drug. Okay? pH and pKa of drug. And only unionized form of drug is able to cross the membrane. Okay? Now remember, in the stomach you have acidic pH. Stomach में क्या होता है? Acidic pH pH होता है, right? In the stomach you have acidic pH. So pH is less than pK. pH is less than pK in the acid. Now in the basic medium, pH is more than pK. अभी बोलेंगे सर आप ये acidic basic क्यों पढ़ा रहे हैं? Because in the stomach you have acidic pH. In the intestine you have basic pH. ये तो कौन सा ड्रग इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होगा, कौन सा ड्रग आपका स्टमक से एब्सॉर्ब होगा, वो का वो कैसे डिसाइड करेंगे? So that depends on the physicochemical properties of drug, and these two factors, these two are the important properties, pKa of drug and pH of medium. pH कितना है medium का, pKa कितना है? Now acidic pH means pH is less than pK, and basic means pH is more than pK, more than the symbol होना चाहिए. Most of the drugs they are either weak acids or weak bases, as I have told. बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो either weak acid होंगे या फिर weak base होंगे. Now for weak acids मतलब क्या, उसमें एसिडिक ग्रुप होगा, जैसे RCOA, जैसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. So weak acid they will remain unionized. Weak acids they will remain unionized in the acidic medium. Weak acids they will remain unionized in the acidic medium at the stomach. Okay? That's why they can easily cross the cell membrane, and therefore most of the weak acids they are absorbed from the stomach. यहाँ पे देखो एसिडिक मीडियम जहाँ पे है वहाँ पे वीकली एसिडिक ड्रग जो होगा वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा. अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज लिपिड सोल्यूबल एंड इट कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो एसिडिक जो भी ड्रग है वीकली एसिडिक ड्रग दे आर एब्सॉर्ब फ्रॉम स्टमक, राइट? व्हेन वीकली एसिडिक ड्रग विल गो इन द इंटेस्टाइन, व्हाट विल हैपन? देयर इज आयोनाइजेशन ऑफ दैट. तो जैसे यहाँ पे दिखा है RCOOH, that is unionized form of drug, RCOH, unionized form of drug, and that is lipid soluble, it can easily absorb from the stomach. Now same drug will go into the intestine, and what will happen? There is a ionization, RCO minus plus H plus, that is ionization, and that's why ionized form of drug is less lipid soluble and it is not easily crossed. Okay, that's why weakly acidic drug they will absorb from stomach and not from intestine. Now for weakly basic drug what will happen? So weakly basic drug they will get ionized in the acidic pH. acidic pH में क्या होगा, उनका ionization होगा. Okay, मतलब stomach में क्या होगा, उनका ionization होगा. And you know that ionized form of drug is less lipid soluble and it cannot easily cross the barrier, cell membrane barrier. So for the weak acid stomach में weak acids unionized रहेंगे and weak bases stomach में ionization होगा. When this weak bases will go into intestine, so it will remain unionized. यहाँ पे देखो unionized रहेगा and they can easily cross the barrier. So that's why weakly acidic drug they are absorbed from the, most of the weakly acidic drug they are absorbed from the stomach, and most of the जो weakly basic drug होते हैं they are absorbed from the intestine. So आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो weak acidic drug होता है, for example weak acidic drug, तो जैसे आपका salicylic acid, acetyl salicylic acid, it is absorbed from the stomach. And for weak basic drug, for example any amine, okay, that is absorbed from the intestine. So weakly acid drug will be more absorbed from the stomach, weakly basic drug will be absorbed from the intestine, right? Now percentage ionization of drug that is given by Anderson acid base. ठीक है, percentage ionization कौन सा ड्रग कितना परसेंट आयोनाइज होगा, कितना परसेंट अनआयोनाइज्ड रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है? वन इक्वेशन, दैट इज नोन एज हैंडरसन हैसल बेस्ड इक्वेशन. एज ए क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, percentage ionization of a drug is given by, that is the Anderson-Hasselbalch equation. So percentage ionization is given by Anderson-Hasselbalch equation. Now for weakly acidic drug, अगर कोई weak acidic drug है, so in that what is the equation? pH minus pK. pH minus pK is equal to log of ionized form of drug, unionized form of drug divided by ionized form of drug. For a weakly acidic drug, the Anderson-Hasselbalch equation is nothing but the pH minus pK log of unionized form or unionized percentage of drug divided by ionized percentage of drug. For weakly basic drug,
pH minus pK is equal to log of ionized percentage of drug divided by अनआयोनाइज्ड परसेंटेज ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सो एज पर द एंडरसन-एसेल्वेज इक्वेशन व्हाट इज द एज पर द एंडरसन-एसेल्वेज इक्वेशन फॉर वीकली एसिडिक ड्रग द इक्वेशन इज, जहाँ पे भी आपको देखो वीकली एसिडिक ड्रग आएगा pH माइनस pK लॉग, ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये देखो फॉर वीकली एसिडिक ड्रग यहाँ पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो अब होगी, देखो अनआयोनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय आयोनाइज्ड फॉर वीकली एसिडिक ड्रग, ठीक है। एंड फॉर वीकली एसिडिक बेसिक ड्रग क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट, आयोनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड। देखो फॉर वीकली बेसिक ड्रग एंड एज पर द एंडरसन-एसेल्वेज इक्वेशन pH minus pK is equal to log of ionized divided by अनआयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, फ्रैक्शन और परसेंटेज जो भी है, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। Now next part is nothing but the percentage ionization is nothing but it is a function of your pKa and pH of medium. Ionization or percent ionization is a function of, इसका function है भाई pH of medium and pH of surrounding and pKa of drug, कि ड्रग का pK मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है एंड pH कितना है medium का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आयोनाइजेशन कितना होगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट, ओके। आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। अभी याद कैसे करना है वो भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग एट अ पीएच, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग एट पीएच दिस। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल ट्रिक होता है, एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट। ये चार्ट कैसे याद रखना है, आपको एक ही चीज आता है, क्या करना है, व्हेन, जैसे मैं क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन। सो एग्जांपल, इफ pKa of morphine is 8, now calculate the percentage of ionized form of drug in the urine at pH 6। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। if pKa of morphine is 8 and calculate the percentage of ionized form of drug in urine at a pH 6। दो चीज दिया आपको, pH दिया है एंड pK दिया है। ये क्या है, pKa इसका मॉर्फिन का, ये क्या है pH किसका, यूरिन का। आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड, परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड नहीं बोला, आयोनाइज्ड बोला। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको क्या करना है उस टाइम पे, एक ही करना है, pH कितना है देखना है, pK कितना है देखना है। क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना, कौन सा, pH माइनस pK, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, pH माइनस pK, pH माइनस pK करो, आपको कुछ वैल्यू मिल जाए। नाउ मॉर्फिन का pK कितना है, 8, pH का है यूरिन का 6, सो pH माइनस pK 6 माइनस 8 कितना आएगा वैल्यू आपका, 6 माइनस 8 माइनस 2, जितना भी वैल्यू आएगा वो देखना है। वैल्यू जो वैल्यू जितना आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज आयोनाइज होगा, कितना अनआयोनाइज होगा। अभी ये तो मालूम है आपको, लेकिन अभी कितना होगा परसेंटेज आयोनाइज्ड, कितना अनआयोनाइज्ड है, ये कैसे करना है। तो अभी चलो चार्ट्स, सो फर्स्ट यू हैव टू डू दिस सब्सट्रैक्शन pH माइनस pK, आपको जो भी वैल्यू आएगा। So most of the times you will get value in a range of this। एक तो आपको वैल्यू कितना आएगा pH माइनस pK का, 0 आएगा, या फिर क्या आएगा, +1 आएगा, मतलब 1, ठीक है, या फिर +2 आएगा। यही वैल्यू आपको -1 आएगा, -1 भी आ सकता है, फिर -2 भी आ सकता है, या फिर -3 भी आ सकता है, ठीक है। -3 का मैं बोलता हूँ, ये वैल्यू आ सकते हैं। pH माइनस pK का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यू विल गेट ए वैल्यू इन रेंज ऑफ दिस। सो व्हाट आर द वैल्यूज, 0, 1, 2, -1, -2। Now pH minus pK for weakly acidic drug, weak acidic drug है, क्या जैसे for example aspirin। So if weak acidic drug is there and if pH minus pK value comes -2, so 99% of drug will be unionized, 99% of drug will be unionized। ठीक है, आपको ये चार्ट लिखना कैसे है, सिंपल है, pH माइनस pK लिखो एक इसमें और वैल्यू लिखो कितना, 4, ठीक है, 0, +1, +2, -1, -2, pH माइनस pK, ये -2, ठीक है, -2, -1, 0, -0, उसके बाद +1, +2, ठीक है। और जहाँ -2 होता है वहाँ 99 लिखो, 99 लिख दिया आपने एसिडिक ड्रग के लिए। उसके बाद 90 के बाद 90, उसके बाद 50, उसके बाद 10 है, उसके बाद 1, ये लिख दो। और वीकली बेसिक ड्रग वैसे लिखना है, बस ये वैल्यू अपोजिट करना है। जो 99% आपने -2 के लिए लिखा था
तो वो 99% आपको +2 के लिए, फिर 99, 90, 50, मतलब ये चार्ट ऐसा याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछा, देखो पीएच माइनस पीके करना है आपको। ऐसा कभी क्वेश्चन आया ना तो क्या करना है आपको, पीएच माइनस पीके, हाउ दिस वैल्यू विल कम। सो वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर आइदर 0, 1, +1, +2 or -1, -2. Now for weekly acidic drug, percentage anionization. Okay. Now if pH minus pK value comes, okay, if pH minus pK value comes -2 for weekly acidic drug, so 99% of weekly acid or weekly acidic drug will be unionized. If pH minus pK value for weekly acidic drug comes -1, 90% of drug will be unionized. अभी देखो 99% अनआयोनाइज्ड है, मतलब 1% जो बचा है वो क्या है, आयोनाइज्ड है। यहाँ पे अगर 90% अनआयोनाइज्ड है, मतलब जो ऊपर का 10% बचा है वो क्या है, आयोनाइज्ड है। ठीक है। नाउ फॉर वीकली एसिडिक ड्रग इफ पीएच माइनस पीके कम्स 0, तो पीएच माइनस पीके 0 आ गया आपका, उसका मतलब भाई 50% ड्रग विल बी अनआयोनाइज्ड एंड रिमेनिंग 50% विल बी आयोनाइज्ड, राइट। इफ पीएच माइनस पीके वैल्यू कम्स +1, percentage of unionized drug will be 10%. with 10% अनआयोनाइज्ड है तो आयोनाइज्ड कितना रहेगा, बेंडी आयोनाइज्ड रहेगा 90%. So likewise that if pH minus pK value comes +2, so that means 1% of drug will be unionized. So if 1% of drug is unionized, then 99% drug will be ionized. So obviously, okay, तो weekly acidic drug के लिए ऐसा करना है, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर वीकली बेसिक ड्रग, वीकली बेसिक ड्रग के लिए देखो pH minus pK वैल्यू, पहले तो आपको pH माइनस pK करना है, आपको वैल्यू आ जाएंगे फॉर वीकली बेसिक ड्रग। अगर आपका ड्रग बेस है तो व्हाट विल हैपन, सो इफ फॉर वीकली बेसिक ड्रग pH माइनस pK वैल्यू comes -2, if it is -2 that means 99%, that means 1% drug is unionized, ये 1% drug क्या होगा, unionized रहेगा, that means जो remaining 99% है that is ionized. If pH minus pK for weekly basic drug comes -1, means 10% drug is unionized and 99% drug is ionized. Now if pH minus pK for weekly basic drug comes 0, that means 50% ionized, 50% unionized. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. If pH minus pK for weekly basic drug comes +1, it means 90% of weekly basic drug is unionized and remaining 10% is ionized. Now, if pH minus pK for weekly basic drug comes +2, that means 99% of drug is unionized and remaining 1% is a. You just have to subtract this pH minus pK value. Okay? Now you will get these values. Either you will get 0, 0 अगर आ गया pH minus pK तो उसका मतलब होता है 50-50% for weak acid and weak base both. 0 अगर आया तो 50-50%, that means 50% ionized, 50% unionized. Most of the time this value will, please mute yourself, most of the time this value will be 0, either 0, +1, +2, -1, -2. In some cases आपको माइनस, ये वैल्यू आपको आएगा 3, जैसे +3 एंड यहाँ पे आएगा -3, एक आध बार आपको ये वैल्यू मिल जाए +3, -3. नाउ इफ pH minus pK for weekly acidic drug comes -3, that means 99 99.9, इसे ये 99 है, ये 99 इसके आगे 0.9 लगा, तो 99.9% drug is unionized, only 0.1% drug is ionized. Okay, so likewise that for weekly basic drug, by chance if this value comes +3, if value for weekly basic drug, if this value comes -3 pH minus pK, that means only that means 0.1% drug will be unionized and remaining 99.9% will be ionized. Likewise that for weekly basic drug अगर pH minus pK आपका +3 आ गया, यहाँ पे आपका 99.9% आपका ये भी हो रहा है, तो ये +3 ये मैक्सिमम ये रेंज में आता है, ठीक है। Likewise this, okay? So +3 मैं next time इसको include करूँगा, +3 नहीं है. Now one example, if pKa of morphine is 8, calculate the percentage of ionized form of drug in a urine at a pH 6. आपको pH minus pK करना है, देखो कितना होता है pH minus pK, 6 minus 8 कितना आएगा, -2 आया, ठीक है।
अभी ये वैल्यू आ गया आपको चार्ट में, आपको ये चार्ट जैसे क्वेश्चन आता है चार्ट ड्रॉ करना है, पीएच माइनस पीके करना है। तो पीएच माइनस पीके कितना है यहाँ पे -2 कहाँ पे आएगा -2, दिस इज -2। आपका ड्रग क्या है, देखो ड्रग है मॉर्फिन। व्हाट इज मॉर्फिन? मॉर्फिन इज अ वीकली बेसिक ड्रग। क्या है? वीकली बेसिक ड्रग है। तो आपने अगर यहाँ के वैल्यू लिख दी तो वो सब गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि ये वैल्यू किसका है? वीकली एसिडिक ड्रग, आपका वीक बेसिक ड्रग, वीकली बेसिक ड्रग, ये वैल्यू। तो -2 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। मतलब इसका मतलब क्या है? 1% ड्रग विल बी अनआयोनाइज्ड and 99% will be ionized. So now pH minus pK per morphin is a -2. So therefore 1% drug will be ionized and remaining 99% will be ionized. Is that clear? Now यही क्वेश्चन आपको अलग तरीके से आ सकता है। कैसे? सेम क्वेश्चन, pH pK of morphine is 8. Calculate the percentage of drug excreted. क्या ये आयोनाइज नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या ड्रग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। Calculate the percentage of drug excreted in the urine when pH of urine is 6. तो अगेन क्या करना है आपको? सेम थिंग, -2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 1% अनआयोनाइज्ड एंड 99% आयोनाइज्ड। तो यह सर बोलेंगे यहाँ पे आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड बोला है आपने, ये कैसे कैलकुलेट करना है? ये हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीटेड कितना आ जाएगा? जहाँ पे देखो जो आयोनाइज्ड फॉर्म होता है, सो वट एवर आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज देयर, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज excreted. For the absorption you need a unionized form. You need an unionized form for absorption. You need a ionized form for excretion. This is for excretion. This is for absorption. So for the absorption you need a unionized form, and for excretion or elimination you need a ionized form. So अगर उन्होंने if they have asked you calculate the percentage of drug excreted at the pH, so what will be your answer? So 99% drug will be unionized. So 99% drug will be ionized. And that's why this ionized form of drug is water soluble and it is excreted in the urine. So 99% drug will be excreted. So अगर यही क्वेश्चन आपको अलग से पूछे, if pH of morphine is 8 and pKa of blood, pH of ठीक है, if pH of morphine is 8, ये क्वेश्चन आपको अलग से पूछा है। जैसे if pK of morphine is 8, calculate the percentage of unionized drug. So at the time your answer will be 1%. वही क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से, if pK of morphine is 8, calculate the percent of drug absorbed at a pH ये देंगे आपको, pH जितना भी है 6 या 7 देंगे, जो भी है। So you just have to calculate same thing, and 1% ionized means 1% drug will be absorbed. Unionized मतलब absorption, ionized मतलब excretion, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको हर बार ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो आपको एब्सॉर्प्शन के लिए भी बोलेंगे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब व्हेन द pKa of drug is this and pH of GIT is this. तो आपको याद रखना है फॉर एब्सॉर्प्शन अनआयोनाइज्ड एंड फॉर एक्सक्रीशन आयोनाइज्ड। तो अगर एक्सक्रीटेड फॉर्म पूछा है तो आयोनाइज्ड परसेंटेज जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड। एब्सॉर्प्शन पूछा है तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड परसेंटेज दैट इज द percentage of drug absorbed. Right? Now we'll take another example. Another example is there. So if pKa of acetyl salicylic acid, if pKa acetyl salicylic acid, if pKa of acetyl salicylic acid is a 3.5, what is 3.5? Calculate the percentage of drug absorbed through the stomach having pH. तो आप मुझे कैलकुलेट करके बोलो ये सिंपली क्या करना है, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, आपको देखना क्या है, सो यू जस्ट हैव टू सी टू वैल्यूज। pKa कितना है? व्हाट इज द pKa? इज 3.5, pH क्या है? 1.5, सो माइनस pH माइनस pKa, 1.5 माइनस 3.5 कितना आएगा? -2, राइट? -2। दूसरा ड्रग, तीसरा चीज क्या है आपको देखना है कि आपको ड्रग कौन सा है, वीकली एसिडिक है, वीकली बेसिक है। तो व्हाट इज एसिटिक सैलिसिलिक एसिड? इज अ वीकली एसिडिक ड्रग, ठीक है। सो कैलकुलेट करके क्या आएगा आपका? pH माइनस pK विल कम -2, ओके, -2, ये आपको वैल्यू आएगा -2। यहाँ पे अलग भी वैल्यू आ सकता है, उस टाइम पे आपको टेबल में कोरिलेट करना है। तो pH माइनस pK इज -2 and aspirin is a weakly acidic drug, so 99% drug will be unionized, right? Unionized है मतलब क्या? ये absorption क्या होगा उसका? 99%।
when 99% drug will be unionized and that will be absorbed. बस आप ही क्या करना है, ये जो वैल्यू है आपको वो थोड़ा अल्टरनेट करो. जैसे मान लीजिए दिस इज द पीएच ऑफ मीडियम, ये क्या है, पीएच ऑफ मीडियम है ये पार्ट में, ये क्या है, पीके, इससे ऐसा कुछ होगा. तो व्हाट विल हैपन, ये यहाँ पे वैल्यू जाएगा प्लस आएगा, अभी होगा ओनली 1% विल बी अनआयनाइज्ड, 1% विल बी एब्सॉर्ब. बट अगर वही एलिमिनेशन के बारे में पूछा है तो 99% ड्रग विल बी एलिमिनेट. के समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे आपको पढ़ाएंगे. तो विल सी द नेक्स्ट पार्ट. ओके, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग डिक्रीजेस द एब्सॉर्प्शन. ओके, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग डिक्रीजेस द एब्सॉर्प्शन. अगर ड्रग जितना आयोनाइज रहेगा, सो आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग decreases the absorption and increases the renal clearance or excretion. So ionized form of drug is water soluble and that's why easy to excrete. Okay, unionized form of drug is lipid soluble and easy to absorb. तो absorption के लिए आपको लिपिड सोल्यूबल ड्रग चाहिए और बॉडी में अंदर जाने के लिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग चाहिए और बॉडी से बाहर निकलने के लिए आपको वाटर सोल्यूबल ड्रग चाहिए. कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, यूरिन इज वाटर. So for the absorption you need a lipid soluble drug and for the elimination or for the removal you need a water soluble drug. अभी आप बोलेंगे सर ऐसा है तो आप सभी लिपिड सोल्यूबल ड्रग ले रहे हो तो वाटर सोल्यूबल ड्रग एक्सपेक्ट करते हो. लिपिड सोल्यूबल ड्रग बॉडी में वाटर सोल्यूबल बनता कैसे या फिर कौन बनाता है, and the process of making lipid soluble drug into water soluble drug in the body is known as a metabolism. We will come to that metabolism in upcoming slide. Now ionization of drug decreases the absorption and increases the clearance of drug, right? Only free form of drug is filtered and both ionized and unionized form of drug is filtered in the kidney. Now only unionized form of drug that will be actively secreted or passively, only ionized form of drug that is trapped into the filtrate. That is about the excretion. There are two important, very important terms because they are important in toxicology. You should know this. ये आपको पता होना चाहिए. You know that for the absorption you need a lipid soluble drug and for excretion you need a water soluble drug. Suppose you have ingested lot of tablets of any basic drug. आपने बहुत सारे बेसिक ड्रग खा लिए और आपका क्या हुआ है, टॉक्सिक हुआ है, वो बॉडी से आपको निकलना है. ओके, तो निकालने के दो तरीके. तो इफ यू गॉट ए पॉइजनिंग ड्यू टू अ बेसिक ड्रग्स, so you have to remove that drug from your body. There are two ways to remove that. First way is expensive. Expensive. You require a lot of money, and that is nothing but the dialysis. तो वो पूरा आपका ब्लड फिल्टर करना है, उसको बोलेंगे डायलिसिस. पहला जो तरीका है वो जो है वो एक्सपेंसिव तरीका होता है. तो आपको डायलिसिस करना पड़ेगा पूरा ब्लड में से वाटर रिमूव करने के लिए. दैट विल टेक टाइम, दैट विल टेक अ मनी, डायलिसिस. सेकंड तरीका क्या होता है, so if you got a poisoning of acidic drug or if you want to remove as a basic drug from your body, if you got a poisoning of basic drug or if you want to remove the basic drug from your body, so what you do, you have to decrease the pH of your urine. So that is known as acidification. Acidification means what? Decrease in the pH of anything, that is known as acidification. Acidification of urine means what? Acidification of urine means decrease in the pH of urine. Now acidification of urine increases the ionization of weak bases. बेसिक ड्रग होता है उसका आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा इसमें अगर यूरिन का पीएच आपने कम कर दिया. सो इफ देयर इज एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन, सो देयर विल बी मोर आयोनाइजेशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग एंड इट विल बी इजीली eliminated. So that's why सपोज आपको कोई बेसिक ड्रग का अगर कोई ओवरडोज हो गया या फिर टॉक्सिसिटी हो गया, so in that case what doctor they used to acidify the urine, they used to decrease the pH of urine by using urinary acid. क्वेश्चन आया था urinary acidifiers कौन ना, आपको कौन है वो urinary acidifiers? Ammonium chloride and vitamin C. Vitamin C is known as ascorbic acid. So these two are the urinary acidifiers. They will decrease the pH of urine. ये क्या करेंगे, pH urine का acidic साइड पे लेके जाएंगे. That's why बेसिक ड्रग का जो है वो एसिडिक पीएच में आयोनाइजेशन ज्यादा होगा एंड वो ड्रग आयोनाइज हो गया मतलब वो निकल जाएगा. तो फॉर द रिमूवल ऑफ बेसिक ड्रग और फॉर द रिमूवल ऑफ ड्रग इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ बेसिक ड्रग, सो यू हैव टू एसिडिफाई द यूरिन. ये कंसेप्ट आप याद रखो, यूरिन को एसिडिफाई कब करना है,
to increase the removal of basic drugs. Alkalization of urine. Alkalization मतलब you have to increase the pH of urine. When you have to increase the pH of urine, so exactly opposite to the above. So if you got toxicity due to weakly acidic drug, alkalization of urine increases the ionization of weak acid. Weakly acidic drug का ionization बढ़ेगा. Therefore increases the renal elimination of weakly acidic. तो आपको यूरिन का अल्कलाइजेशन कब करना है, यूरिन का एसिडिफिकेशन कब करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए. तो एसिडिफिकेशन कब करना है, जब बेसिक ड्रग का पॉइजनिंग होगा, या अल्कलाइजेशन कब करना है, जब एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग. दैट क्लियर. नाउ व्हाट आर द यूरिनरी अल्कलाइजर्स, एग्जांपल्स ऑफ यूरिनरी अल्कलाइजर. मैं हूँ, आप हो, नहीं. What are the examples of urinary alkalizer? That is sodium bicarbonate and acetazolamide. Sodium bicarbonate and acetazolamide. These are known as urinary alkalizers. ये क्या है, urinary alkalizers है. Ammonium chloride and vitamin C. These are nothing but the urinary acidifier. इनको urinary acidifier बोलेंगे तो ये यूरिन का pH कम करेंगे. urinary alkalizer बोलेंगे तो वो यूरिन का pH बढ़ा देंगे. यूरिन ज़्यादा pH है तो weakly acidic drug आयोनाइज होगा और रिमूव होगा. अगर pH कम है तो weakly basic drug आयोनाइज होगा and remove. We have seen the process of absorption. Just a quick review of that. Most of the drugs, they are absorbed by different mechanisms. So first one is the passive diffusion. So in the passive diffusion means there is a movement of drug due to concentration gradient. There is no requirement of energy, right? Now in the passive diffusion you don't need any carrier. The process is downhill or down gradient. तो जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं. देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन gradient. दैट इज नोन एज डाउन ग्रेडिंग. इट इज नोन एज डाउन ग्रेडिंग और डाउन हिल. दैट इज नोन एज डाउन ग्रेडिंग और डाउन हिल. सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नॉट सैचुरेटेड. Okay? Not saturated. Second is a facilitated diffusion. So again energy is required. Whether no, there is no requirement of energy because this is also a down gradient. It is required, obviously yes. So protein carrier is required. Down gradient process. Now ये याद रखना आपको, जहाँ भी कैरियर आएगा that process is saturatable. क्योंकि कैरियर क्या होते हैं, limited in number होते हैं. Because carriers are nothing but the proteins. They are limited in the number and that's why they carry limited amount of drug, limited molecules of drug. So suppose vitamin B12, vitamin जो होते हैं B complex vitamins. So if you increase the dose of vitamin B complex, अपना B complex जितना लगता है उतना ही लेगी बॉडी. अपने ज़्यादा डोज भी दिया तो वो एब्सॉर्ब नहीं होगा. Why? Because for the absorption of B complex vitamin, you have a certain proteins in your GIT which are responsible for the facilitated diffusion of that vitamin B complex. Now if you increase the dose, but carriers are limited, that's why only limited amount of vitamin B or required amount of vitamin B or whatever amount of carriers are present, that amount of vitamin B drugs or vitamin B complex vitamins will be absorbed. Okay? So therefore it is saturable. Now in case of active transport, energy is required because that is a uphill process or against the concentration gradient. That it is also required against the concentration gradient or uphill process. And again it is saturable, right? So this is the overall summary of your absorption. Now absorption is completed. Okay. Now once again factors affecting on absorption. Absorption के लिए कौन से factor responsible? Okay. So first is nothing but the formulation. First one is nothing but the formulation factors or pharmaceutical factors. Type of formulation: tablet, capsule, and liquid oral. Obviously, if you take a tablet, it will go in intestine, it will go into the stomach, it will disintegrate, then dissolution, and then absorption. It will take time. Suppose you take a syrup. So what will happen? Syrup is already drug in a solution. So there is no need to disintegrate and dissolution. So two steps are present. So syrups are better absorbed than tablets. This is a entry coated tablet. Suppose so entry coated tablet means it will be not broken down into the stomach. It will absorb from intestine. So it will be late absorb. So type of dosage form will also absorb the type of dosage form also affect the absorption. Now second is nothing but the solubility. Okay? Solubility. One is the pharmaceutical factors or formulation. And second one is nothing but the disintegration. So more will be the disintegration of drug, more will be the absorption. Now third one is nothing but the dissolution. With the dissolution of drug, dissolution means formation of solution
of your drug with the GIT dissolution. So more will be dissolution, more will be the absorption. Particle size. Next factor is the particle size. Increase in the particle size will increase the absorption. Particle size is inversely proportional to the absorption. Particle size कम रहेगा उतना absorption ज़्यादा रहेगा. So more will be the particle size, less will be the absorption. Less will be the particle size, more will be the absorption. So it is a inversely proportional. Now next one is nothing but the lipid solubility. So more will be the lipid soluble drug, faster will be the absorption. जितना ज़्यादा lipid soluble है उतना ज़्यादा absorption. pH and ionization. We have seen all the details about this. Only unionized form of drug which is lipid soluble and that is absorbed. For excretion you need a water soluble drug that is ionized. Okay, now presence of other drug. जैसे होता है presence of other drug. For example, suppose you are on a treatment for tetracyclines. आपको कोई infection हुआ है and doctor has prescribed you tetracyclines antibiotic, and along with that you are taking any antacid. Antacid ले रहे हो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर आप एल्यूमिनो हाइड्रोक्साइड जेल. So what will happen? Tetracyclines they will form a complexes with the antacids and they that will be not absorbed. Presence of other drug. Then GIT motility. GIT. Suppose you are suffering from diarrhea. होना नहीं चाहिए आपको डायरिया, लेकिन अगर आपको डायरिया बाई चांस हो गया क्या होगा? So diarrhea means what? Diarrhea means increase the motility of your GIT. In the increased motility of GIT, what will happen? There will be decreased absorption. There will be decreased motility, decreased absorption. Decreased motility, increased absorption. मोटिलिटी अगर बहुत ही कम है आपका, मतलब कॉन्स्टिपेशन है आपको, तो उस टाइम पे एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा. जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीजेस, absorption decreases. GIT motility decreases, absorption increases. Presence of food. Lipid soluble drugs, they are, if lipid soluble drug is there and if you are eating fatty food, what will happen? So there is a more absorption of that. Presence of food. Some foods will retract the absorption of food drugs. Presence of food. Now next one is nothing but the area of absorbing surface. So as there is an increased area of absorbing surface, there is increased absorption. So directly proportional to the appeal. Next one is nothing but the vascularity. The vascularity. More will be the vascularity or blood vessel supply to the absorbing surface. More will be the absorption. Directly proportional. Next factor is nothing but the metabolism, particularly pre-systemic metabolism or first pass effect. First pass effect. So it will also increase the drug absorption. Now disease, presence of disease depends. Disease also. So it will also affect the. These are the factors affecting on the absorption. You might have seen in the details while studying the semester exam. Semester में आपने detail में पढ़ा होगा, but at least you have to remember these things. Now next one is a first pass effect. We have already seen this first pass effect, but I will like to explain you again because important. When drug is given by oral route, so after its absorption from the GIT, what will happen? Most of the blood supplied to GIT, most of the blood from GIT is carried to a liver by one. Most of the blood from GIT is carried to a liver by a one vein known as a portal vein. Portal circulation. So when drug is given by oral route, after its absorption from the GIT, as you know that most of the blood from GIT area is carried to a liver by a portal vein. Here some amount of drug is metabolized. So again that depends on the physical chemical properties of drug. Okay, some amount of drug is metabolized before showing its pharmacological action. This metabolism is known as a first pass effect. Pre-systemic metabolism. ड्रग लेते हो कोई खाते हो तो उसका एब्सॉर्प्शन होगा आपके जीआईटी में से. मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम जीआईटी इज कैरिड टू ए लीवर बिकॉज जीआईटी में क्या है, आपको सिर्फ ड्रग नहीं है, आप खाना भी खाते हो, सिर्फ ड्रग नहीं खाते. तो खाना, लीवर क्या है, लीवर इज अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ योर बॉडी. सो मोस्ट ऑफ द ब्लड which most of the blood from GIT, वो ब्लड में क्या रहेगा, वो ब्लड में आपका जो खाना खाया आपने, जो बड़े बड़े मस्त स्वीट खाए, जैसे उसमें का शुगर है, जो अगर बिरयानी खाई, बिरयानी से प्रोटीन आएगा, ये आपने खाया, वट एवर यू हैव इटन. सो न्यूट्रिएंट, सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड्स and inorganic ions and all that will be carried to a liver first because that is a metabolic factor of your body.
So in that blood you have your drug. So along with the other nutrients, drug also carried to your liver. Now some part of drug is metabolized in the liver. So depends on the physical chemical properties of drug. अगर वो drug बहुत ही ज़्यादा liquid soluble है, if it belongs to class 1 drug, so there is a metabolism of that drug in the liver before going to a systemic circulation or before showing its pharmacological action. Now this metabolism is known as the first pass metabolism or pre-systemic metabolism, and that's why it decreases the bioavailability. Those drugs which undergo first pass effect, they will have less bioavailability. Okay? Absorption and first pass effect. These two are major determinant for bioavailability. Absorption and first pass effect are important determinants for bioavailability. बायोअवेलेबिलिटी कितना होगा कौन डिसाइड करने वाला है एक तो एब्सॉर्प्शन अगर एब्सॉर्प्शन ज़्यादा हुआ तो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा अगर फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा है बायोअवेलेबिलिटी क्या होगा नाउ यू कैन सी ओवर हियर सो व्हाटएवर यू आर रीडिंग तो मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है आपका जीआईटी दैट इज कैरिड टू लिवर यहाँ से जो भी आपका न्यूट्रिशन यहाँ से जो ये इंटेस्टाइन है यहाँ से जो न्यूट्रिशन है आपका अलॉन्ग विद द ड्रग टैबलेट आप ओरल ले रहे हो टैबलेट ड्रग भी उसमें तो न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट इज एब्सॉर्ब ब्लड इज कैरिड टू लिवर and some amount of drug is metabolized in this process by the liver known as a pre-synaptic metabolism and after that so it will decrease the bioavailability more will be the first pass metabolism of drug bioavailability and there are certain enzymes also they are present in the GIT which metabolize drug before reaching to its systemic circulation or before showing the pharmacological effect known as a pre-synaptic so drug undergoing the first pass कौन से ड्रग्स है जो ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट दिखाते हैं कौन से ड्रग्स है जो ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट दिखाते हैं as per the biopharmaceutical classification drugs are classified into okay as per the biopharmacological classification drugs are classified into four groups that is a four groups that is a class 1 drug class 1 class 1 drugs means then class 2 drugs as per the biopharmaceutics drugs are classified into four classes class 1 class 2 class 3 class 4 now class 1 drugs will have solubility high solubility and high permeability इसका solubility भी ज़्यादा रहेगा permeability ज़्यादा now second class drug will have high solubility low permeability third class drug will have low solubility high permeability fourth class drug will have low solubility as well as low permeability so remember जो class 1 drug as per the biopharmaceutical classification they mostly undergo first pass further examples of drug these are the examples of examples of drug which will show very low first pass rate मतलब ये बहुत ही कम first pass rate होता है उनका and bioavailability of these drug is not affected by first pass metabolism like phenobarbital nalbuphine phenobarbital is used in the epilepsy anti-epileptic drug होता है ये it is also scientific hypnotic anti-anxiety nalbuphine is a NSAID non-steroidal anti-inflammatory in the arthritis tolbutamide is an anti-diabetic drug Pindolol is nothing but a beta blocker. So all these drugs are low first pass effect. So first pass effect will not have influence or much effect on the bioavailability of these drugs. Those drugs which will undergo first pass metabolism, intermediate first pass metabolism. तो ये कुछ मात्रा में ये बहुत ही कम मात्रा में फर्स्ट पास इफेक्ट दिखाते हैं ये उससे ज़्यादा थोड़ी मात्रा में दिखाते हैं so intermediate so aspirin is there quinine desipramine noradipine so all these are nothing but the antidepressant ये दोनों भी है में drug anti-malaria ये क्या है ये नहीं से now those drug which will undergo high first pass metabolism सबसे ज़्यादा first pass metabolism कौन दिखाते हैं ये दो so high examples of drugs showing high first pass metabolism so they are not given by oral route so isoprenylene so drug used in the cardiogenic shock then lidocaine it is a local anesthetic hydrocortisone steroid testosterone steroid so they are not given by oral route उनका bioavailability क्या होता है कम होता है so oral bioavailability of this drug is very less because they will undergo high first pass now again these drugs also propranolol alpranolol salbutamol and verapamil they are also known as a class 1 drug okay so they also have low oral bioavailability but that's why dose of this drug is इनका डोज बढ़ा के दिया जाता है क्यों क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म होता है they are not given orally they are given orally still they have a high pass effect but they are given orally
but their dose is increased. क्वेश्चन आता है आपको फर्स्ट पास इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ क्लास 1 ड्रग एज पर द बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 2 ड्रग्स, ये इसके ऊपर वो अपन बाद में देखेंगे. So I will